Hello guys, welcome to BIOGURU. Today we will discuss about the photorespiration. So to understand the photorespiration, we must know a little more about the first step of Calvin cycle or Calvin pathway, the first CO2 fixation step. This is the reaction where RuBP combines with the CO2 to form two molecules of 3-PGA that are catalyzed by the RuBisCO. So RuBP combines with CO2, there is formation of two molecules of 3-PGA. RuBisCO is most abundant enzyme in the world. It shows dual activity, carboxylation and oxygenation. CO2 binding is called carboxylation, O2 binding is called oxygenation. तो दोनों ही activities RuBisCO के पास हैं. तो RuBisCO has greater affinity for CO2 than for O2. The binding is competitive. Why it is competitive? Because देखिए अब जितने भी C3 plants होते हैं, C3 प्लांट्स में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों एक ही सेल के अंदर है. ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन है. ग्रेना के अंदर O2 का फॉर्मेशन हुआ बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, O2 बाहर आएगा स्ट्रोमा में, देन सेम CO2 एनवायरमेंट से डिफ्यूज होके आएगा स्ट्रोमा के अंदर. तो स्ट्रोमा के अंदर O2 एंड CO2 दोनों प्रेजेंट है. अब RuBisCO के पास दोनों एक्टिविटीज हैं, तो RuBisCO O2 को भी बाइंड करेगा और CO2 को भी बाइंड कर सकता है. दैट्स व्हाई देयर इज अ कंपटीशन. इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 that determines which of the two will bind to the enzyme. In C3 plants, some O2 does bind to RuBisCO and hence CO2 fixation is decreased. अब देखिए अगर मान लीजिए O2 बाइंड हो गया तो सिंपल सी बात है, जो CO2 फिक्सेशन है वो डिक्रीज होगा. Here the RuBP instead of being converted into two molecules of PGA binds with O2 to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate. तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट का, दूसरा बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट का, in a pathway called photorespiration. In the photorespiratory pathway there is synthesis neither of sugars nor of ATP. तो ना ही यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ और ना ही sugars का. Rather there is release of CO2 with the utilization of ATP. और CO2 को रिलीज करने के लिए हमने एक और ATP यूज किया. In the photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP and NADH. ना तो ATP फॉर्म होगा और ना ही NADH. Therefore फोटोरेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. इसलिए क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है. किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं है और एटीपी हम यूज भी कर रहे हैं. इवन 3 सेल ऑर्गेनेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो टाइम भी वेस्ट है, एनर्जी भी वेस्ट है और कुछ प्रोडक्शन भी नहीं है. इन C4 प्लांट्स फोटोरेस्पिरेशन डजंट अकर. और जो C4 प्लांट्स हैं वहां पे फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज वहां लाइट रिएक्शन मेसोफिल सेल्स में है और डार्क रिएक्शन बंडल शीट सेल में है. दोनों रिएक्शन अलग अलग सेल्स में होती हैं, इसलिए वहां पे O2 कंपीट करने के लिए नहीं है CO2 के साथ. इन C4 प्लांट्स फोटोरेस्पिरेशन डजंट अकर. दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट. अब वहां CO2 कंसंट्रेशन है, O2 कंपीट करने के लिए नहीं है, तो CO2 बाइंड करेगा RuBisCO से, RuBisCO की हेल्प से, RuBP से, देन फॉर्मेशन होगा वहां पे शुगर्स का. This takes place when the C4 acid from the mesophyll cell is broken down in the bundle sheet cells to release CO2. This results in the increasing the intracellular concentration of CO2. ये पढ़ा था हमने कि वहां पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहाँ बनता है, मेसोफिल सेल में. फिर वो कहाँ जाएगा, बंडल शीट सेल में, CO2 रिलीज करेगा और C3 का रिजनरेशन दोबारा से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में हो जाता है. In turn, this ensures that the RuBisCO functions as a carboxylase, minimizing the oxygenase activity. Now that you know the C4 plants lack photorespiration, you probably can understand why productivity and yields are better in these plants. तो किसमें better होगी? C4 plants में. In addition, these plants show tolerance to higher temperature. देखिए ये हमारा एक फोटोरेस्पिरेशन का कंप्लीट मैकेनिज्म है. अब यहाँ फोटो रेस्पिरेशन को आप समझेंगे. देखिए जिसमें O2 बाइंड हुआ, यहाँ O2 की बाइंडिंग हुई. जब O2 की बाइंडिंग होगी तो क्या बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लिसरेट. फॉस्फोग्लाइकोलेट से एक फॉस्फेट निकल जाएगा, क्या बनेगा, ग्लाइकोलेट. बिकॉज फॉस्फो निकल गया यहां से तो क्या बचा, ग्लाइकोलेट. ग्लाइकोलेट एंटर करेगा आपके पेरोक्सिसोम में एंड बनेगा ग्लाइऑक्सिलेट
प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देन ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में, एंड ग्लाइसिन विल एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लाइसिन आएगा, इससे क्या निकलेगा, हमारा NH3 मॉलिक्यूल निकल गया, CO2 मॉलिक्यूल निकल गया, और एक NAD से NADH बना, मतलब एक हाइड्रोजन निकल गया। तो क्या बना, सेरीन। अब सेरीन वापस जाएगा पेरोक्सिसोम में। अब सेरीन से फॉर्मेशन होता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट से फिर से हमने क्या किया, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो NADH से क्या बना, NAD, तो एक हाइड्रोजन ऐड किया गया, क्या बन गया, ग्लिसरेट। ग्लिसरेट एंटर करेगा क्लोरोप्लास्ट में, एडिशनल ATP आपने यहां पर यूज किया, और फिर क्या होगा, एडिशनल ATP जो आपने यूज किया है वो अगेन फिर आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन में एंटर कर जाएगा। तो वही देखिए, सेम घूम के वहीं आ गया। तो इतना टाइम भी वेस्ट है, एनर्जी भी वेस्ट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेस्टफुल प्रोसेस। तो ये सिर्फ C3 प्लांट्स में होती है, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। So RuBP carboxylase acts as RuBP oxygenase at dash CO2 concentration and dash oxygen concentration. Low, low, low and high, high and high, and high and low. It is low and high, low CO2 concentration and high oxygen concentration. Now, factors affecting photosynthesis. So, factors affecting photosynthesis are broadly classified into two categories: internal factors and external factors. Internal factors include number, size, age, and orientation of leaves, mesophyll cells and chloroplasts, internal CO2 concentration, and the amount of chlorophyll. The plant or internal factors are dependent on the genetic predisposition and the growth of the plant. So external factors are light, temperature, CO2 concentration, oxygen, and water. Then all these factors simultaneously affect the rate of photosynthesis. Though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation. Usually one factor is predominant or is the one that limits the rate. Hence, at any point, the rate of photosynthesis is determined by the factor available at suboptimal level. अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं तो उनमें से अफेक्ट कौन सा करेगा, जिसका अमाउंट या जिसका नंबर सबसे कम है, जो मिनिमम है। सो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को समझने के लिए एक छोटी सी बात समझेंगे। अगर हमारी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स में से 4 एडल्ट्स हैं और एक छोटा बेबी है। छोटा बेबी जो 4 to 5 ईयर्स का है, 4 to 5 ईयर के बेबी को आप गोद में भी नहीं उठाते। अगर आप वॉक करने जाओगे तो आप उस बेबी को पीछे छोड़कर भी आप आगे नहीं चले जाओगे। तो आपकी सबकी स्पीड कौन कंट्रोल करेगा, दैट बेबी। तो होता क्या है, जो सबसे कम अमाउंट में है, जो बहुत लिमिटेड है, तो वो आपके सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। सो व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, Blackman's law of limiting factors comes into effect. If a process like photosynthesis is conditioned as to its rapidity by a number of separate factors, the rate of process is limited by the factor that is present in a relatively minimal value. देखिए, जैसे मान लीजिए क्या था, अगर 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन एक चीज बहुत कम है, तो जो चीज सबसे कम है वो आपके फोटोसिंथेसिस के रेट को कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट एंड CO2 कंडीशंस, अ प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो। तो यहां पे टेम्परेचर क्या हुआ, लिमिटिंग फैक्टर। But if given the optimal temperature, the leaf will start photosynthesizing. Then light. So light affects photosynthesis in 3 ways: quality, intensity, and duration of exposure. So while discussing light as a factor that affects photosynthesis, there is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rates at low light intensities. At higher light intensities, gradually, the rates does not show further increase as other factors become limiting. What is interesting to note is that light saturation occurs at 10% of the full sunlight. Hence, except for plants in shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor in nature.
Increase in incident light beyond a point causes the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis. अगर light beyond the limit जाती है then क्या था कि वो chlorophyll को destroy करेगी, chlorosis करेगी, जिससे आपकी photosynthesis का rate decrease होगा. Next is CO2 concentration. The major limiting factor concentration is very low in the atmosphere, 0.03 to 0.04. Increase in concentration up to 0.05% can cause an increase in CO2 fixation rate. Beyond this levels can become damaging over longer periods. And C3 and C4 plants respond differently to CO2 concentrations because C4 plant में CO2 का fixation का rate काफी तेज होता है. At low light intensities, neither the groups respond to high CO2 concentration. At high light intensities, both C3 and C4 plants show increase in rates of photosynthesis. C4 plants show saturation at about 360 microliter per liter, while C3 plants respond to increased CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450 microliter per liter. The currently available carbon dioxide concentration in atmosphere is a limiting factor for C3 plants. C3 plants respond to higher CO2 concentration by showing increased rates of photosynthesis, leading to higher productivity, has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. For example, greenhouse crops, tomatoes and bell pepper. Then these crops are allowed to grow in CO2 enriched atmosphere that leads to higher yields. देखिए आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा. ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि आपने एक फील्ड को, एक छोटे से फील्ड को आपने कवर कर दिया ग्लास बॉक्स के थ्रू, या ग्लास का एक बड़ा सा हॉल है या रूम है, जिसमें क्या था कि जो CO2 कंसंट्रेशन है वो बाहर नहीं निकल पाती. इससे क्या था, ज्यादा CO2 बढ़ती है. तो अगर एनवायरनमेंट में CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से वो ज्यादा लाइट को ट्रैप करेंगे, हीट बढ़ेगी, जिससे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. द डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड. Though the light reactions are also temperature sensitive, they are affected to a much lesser extent. C4 plants respond to higher temperatures and show higher rate of photosynthesis, while C3 plants have a much lower temperature optimum. The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depends on the habitat that they are adapted to. कि वो कौन से habitat में है, वो cold areas में है, temperate conditions में है, किस environment में है और किस condition में वो grow कर रहे हैं, उन्होंने उनको adapt किया है. Tropical plants have a higher temperature optimum than the plants adapted to temperate climates. Next is water. Water is one of the reactants in the light reaction. The effect of water as a factor is more through its effect on the plant rather than directly on photosynthesis. Water is stress that causes stomata to close, thereby reducing the CO2 availability. Besides, water stress also makes leaves wilt, मतलब leaves का झड़ जाना, thus reducing the surface area of the leaves and their metabolic activity as well. Now, photosynthesis, a process of manufacture of organic compound, is catabolic process, anabolic process, both 1 and 2, and none of these. Yeah, anabolic process. First, CO2 fixation in C4 plants, PEP, RuBP, OAA or malic acid. Yes, it is PEP, phosphoenol pyruvate.